probably the last lectures on the STP. Since last two lectures, we have seen the theoretical concept of STP. Today we'll see the practical knowledge on STP and also uh, little of configurations. As I told earlier, STP is already configured in Cisco devices, layer 2 devices. But we can also have some facility, Cisco giving us some facility where we can change the configuration little. Already when you configure any network, background STP is working, already configured. Like VTP, we need to configure, we need to create VLAN also. But for the STP, it is already pre-configured in the Cisco layer 2 devices. That configuration we can change. We cannot solely configure the configurations. We can just we have little facility to change the configurations. So that we'll see today. Now, talking about the STP, we have seen many terminologies. Last lectures, we have seen that even there are three switches. Now, if there are loop in the connections, then which port is going to disable? So these switch on in this connection, switch on has this port and this port, two port. Switch 2 also has two port. Switch 3 also has two port. Now in these configurations, a loop is visible. Then to prevent the loop, STP do what STP do? STP prevent the loop. So to prevent the loop, STP will block some port. So at what basis the port blocking will be done? To block the port, we have already seen. To block the port, STP calculate path cost. Maximum path cost port. Maximum path cost port has been blocked. So in our example, let's say this has port cost 4, 19, this has 19. Now switch 2 has total path cost is 19 plus 19. So the port which is connected to switch 2. So that's giving us 19 plus 19, 38. And switch 3 has 19 plus 4, which is 23. And switch on is your root bridge. If switch on is the root bridge, then as I mentioned earlier, the direct connected port of other non-root bridge switches will be not blocked. So switch 2 का ये वाला port and switch 3 का ये वाला port will be not blocked.
क्योंकि वो रूट ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड. Now among these two will be blocked. Now in this case, switch 2 का आया path cost 38, switch 3 का आया path cost 20. So who will be blocked? जिसका सबसे ज्यादा है that will be blocked. So switch 2 का ये जो पोर्ट ये वाला ब्लॉक होगा. Switch 2 का path cost ज्यादा आ रहा है. That's why this port cannot be blocked, can't be blocked, can't block. But this will be blocked and this will be not because it is giving 20. 19 plus 4. So these on of switch 3 will be not blocked. It will be in designated status. It will get the designated status, but these will be blocked. Okay, this is already talked. Now let's assume now all the port cost is same. All the port cost is now same. So 19, 19 and 19. In this case, tell me how the blocking will be done. So in this case, I am writing second point. If path cost are tied, if they are tied, if path costs are tied, then the port of the switch of a switch will be blocked which has maximum MAC address, maximum MAC address. So if path costs are tied, so in this case, switch 2 का देख लो 38, 19 plus 19. Switch 3 का in this case 19 plus 4 था in the previous case, but in this scenario ये भी 19 है, ये भी 19 है. So that is also giving you 38. Both are similar. So in this case, ये दो पोर्ट के बीच कौन सा ब्लॉक होगा? ये तो ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि this is directly connected with the root bridge. But this among these two will be blocked. But which will be blocked? In this case, the both are same. Now in this case, if there is a tie, जिसका MAC address ज्यादा है, उस वाला पोर्ट ब्लॉक होगा. स्विच 2 का अगर MAC address ज्यादा है, तो ये ब्लॉक होगा. स्विच 3 का अगर MAC address स्विच 2 से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक होगा. So basically it will compare the MAC address between switch 2 and switch 3. Switch 2 and switch 3 के between MAC address compare होगा. और जिसका कम होगा वो वाला का पोर्ट रहेगा, दूसरा वाला पोर्ट जिसका ज्यादा है MAC address, that port will be blocked. So if switch 3 giving the max MAC address than the switch 2, then switch 3 this port will be blocked. Or if switch 2 giving the MAC address greater MAC address than the switch 3, then this will be blocked. This we have already talked. Still I revisit it to go with the further concept. Okay. Now let me talk
Another terminology. Convergence. Convergence. Convergence mode. Convergence mode. So our same example, let me draw the same example. Switch on, switch to, and we have switch 3. Same example. These are connected. These are connected. Okay, let me take some different color. Convergence. So switch on to switch 3 connected. Switch 2 to switch 3 connected. Switch 2 to switch on. So when you establish these connections, first you establish the connections. At that time, in Cisco packet tracer, you will see that to make this network stable, network stable होने के लिए, to turn the network in the stable mode, it required some time. You have seen this, I think, in Cisco packet tracer. Whenever you configure any network very first time, it takes some time to come into the stable mode. So that time, in that time, it's called convergence mode. स्टेबल मोड में आने तक जो टाइम लेता है उसको कहते हैं कन्वर्जेंस मोड. So when you first configure any network, it takes some time to come into the stable mode. When until the stable mode, you cannot send the data. So that time is called convergence mode. So in this convergence mode, switches or router do some work. The first work they do is listening. Listening. Second work they do is learning. And third work they do is forwarding. Let me tell you each of these state. So in convergence mode, first when they configure, they will listen, then they will learn, and last में जो state में वो लोग आएगा switches, that is forwarding state में आएगा. जब ये forwarding state में आएगा, then it is come to stable mode. Okay. So what they do in listening? Listening में क्या होता है? Switch मैंने बोला हूँ. Switches are first send BPDU in between them. So BPDU in between them. So when they send BPDU between them, so BPDU एक message होता है. So that required to elect between the switches to elect a root bridge. So they send BPDU message between them. This state, in this state, listening state में वो लोग BPDU message send करते हैं. Learning state में क्या होता है? After sending the BPDU message, they learn who is the bridge, root bridge, by calculating the bridge ID.
So learning statement, they calculate the bridge ID and decide who is the root bridge. So listening statement they send the BPDU message, listen करता है BPDU मिलने के लिए कि कोई BPDU मैसेज आ रहा है कि नहीं, इसको लिसन करता है नेटवर्क स्विचेस. लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में दे लर्न that who is the root bridge by calculating bridge ID. Then after deciding who is the root bridge, they come into the forwarding state. Forwarding state में ये decide हो जाता है कौन सा port. So after learning, it is decided कि कौन सा port forward कर पाएगा या designated port होगा. कौन सा port? Let's say these are the designated ports. So this will be green color. This will be green color. Let's say this is the block. This is the block port. ये block हुआ yellow color से. So this will be yellow color, something this. So this is yellow means block. So these happen after the convergence mode complete. तुम देखोगे जब कोई configuration Cisco packet tracer में config होता है, it takes some time. After that, in that time they do listening, learning and forwarding. After that, you will see some of the port become green, some of the port become yellow or orange. This type of scenario you will see in any configuration of the Cisco packet tracer. So this thing to come into the stable mode, कि कौन सा green होगा, कौन सा orange होगा, that will decide in the convergence mode. In that mode, switches do many operations. One is listening, sending the BPDU, learning. It decide who is the root bridge in the learning state. Then forwarding state में आता है कि कौन message send करेगा, कौन message नहीं send कर पाएगा. So that is decided. So this whole work is done in the convergence mode. Got it? So I will show you the practical things, then you will learn more. अभी तक मैंने Cisco packet tracer में हाथ भी नहीं लगाया हो STP का लेक्चर में, but today we will going to see some practical whatever I have taught you in these two lectures. Today I will show that practically how it looks. That I will show you. How the root bridge is decided. How what is this convergence mode? What is the designated port? Those things today we will see in practically. So convergence mode खत्म होने के बाद ही network stable mode में आता है, and that time they can send the data in between them. Switches can send the data in between. Okay. So this is very important term. What is convergence mode? So when you first time configure any network, switches do some operation. They first listen. They send BPDU in the listening state. They send the BPDU message in between them. Then they come to the learning state. In the learning state, they decide who is going to be the root bridge. And after deciding that, they come to the forwarding state. In forwarding state, it is decided which port is going to the designated port or root port, and which port is going to be the block state, block port. So that thing is complete in the convergence mode. After that, any network come into the stable mode. So this thing is take some time. So in Cisco packet tracer, if they are using in Cisco packet tracer, I have saying that the devices are already using the STP spanning tree protocol. Layer 2 devices are
using the STP, spanning tree protocol. If devices are using spanning tree protocol, uh, most probably it take फ्रॉम कन्वर्जेंस मोड से स्टेबल में जाने के लिए जो टाइम होता है, मतलब लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ये सब करने के लिए जो टाइम लगता है ऑलमोस्ट 50 सेकेंड टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड टाइम लगता है कन्वर्जेंस मोड से। जब फर्स्ट तुमने स्विच को कॉन्फ़िगर किया, कनेक्ट किया, आफ्टर दैट it learn, listen, forward, that take 50 seconds of time. Then they come to the stable mode. Okay, 50 seconds of time it will take if those devices are using STP protocol. So I have already said कि STP protocol already configured होता है switches. So if the devices are going to the STP protocol, approximately 50 seconds it will take. Okay. Now I am going to show you this whole things, whole theoretical concept practically. Okay, let me open Cisco packet tracer. So Cisco packet tracer open हो गया है. Now I will take some switches. Very basic switch, 2960 model. So same configurations I will do whatever I have shown you in the lecture note. So that same configuration, same example configuration I will made here. So I have taken 3 switches. This is switch 0, this is switch on, this is switch 2. So I will take copper crossover cable because I am going to connect the same devices, similar devices, switch to switch. अगर दोनों device same होगा, so I will take which cable? Copper crossover cable. अगर दोनों device different होगा, let's say switch to connecting router, then that will be copper straight over cable. So I am going to connect the network. See, this is now convergence happening. All are blocked state. This orange color is now defining all are block state. It will take some time to stable. You will see slowly this become now green. This become now green. You can see. Slowly it is taking time. So that means they are listening, learning, and then they come to forward state. See, some are become green. Some are become green, and these become block. This orange or yellow color is defining here. It's a block, but these are the forwarding port or designated port. Now I have to see. So this state, देखा पहले मैंने जब configure किया, it takes some time to come into this state. कोई green हुआ, कोई orange हुआ. So initially all are orange था, block थे सब. वो लोग धीरे धीरे लिसन किया, लर्निंग किया, and then they come to the forwarding state. This is now stable state. So this is now stable state. Now you can send the data. So again I am showing you, let's say again I am showing you deleting. See, I am again establishing the connections. Again establishing the connection between the switches.
Connection done. Now see, all are oranges. All the ports are oranges. Some circle is there in the port. See, small oranges, small oranges point. Now they are listening and learning. Then they will forwarding, and then they will come to the stable state. See, slowly these become now green. These two become green now. These two become now green. So now they are stable state. This will remain orange. So this port is blocked actually. So in spanning tree protocol, so behind spanning tree protocol is running in the switches, in the switches system behind spanning tree protocol is running, and that is already configured, so it is running. So that time spanning tree protocol actually decide कि कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा और कौन सा designated या root port होगा. So all the designated port or root port are green. But one port I say it will be blocked in this connection, so these one will be blocked. This is blocked. So this state is called this time after configuring the network and coming to this stable state. इसको कहते हैं convergence mode, convergence time. Stable state में आने के लिए जो time लगा हम लोगों को, so it almost take 50 seconds. Okay. Now these connections is stable now, but we don't know which one is the root bridge here. We don't know. We have to see that spanning tree protocol is जो behind में चल रहा है, that protocol किसको root bridge बनाया है, that we have to see. So root bridge किसको बनाया है I don't know, but we know what, जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम होगा वही रूट ब्रिज होगा. So जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, let's verify that concept practically. So I don't know among these three switches who is the root bridge, but I know one thing, जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम है, the lowest bridge ID switches is going to the root bridge. So that I will verify now practically. Okay. So let's start with switch 0. This is switch 0. Switch 0 से start करते हैं. So this is switch 0. This is switch on. This is switch 2. So let's start with switch 0. Go to the CLI. I am in switch 0 CLI. Okay. So going to the privilege mode. Privilege mode में अभी हम हैं. So I will execute a command here. Show spanning tree. This is, you need not to configure anything. You just tell, I have said that already spanning tree background में configured है, switch में configured है. So you just see that what it configured. So just show the spanning tree. So switch 0 में मैं spanning tree show कर रहा हूँ. Something came. देखो. See. Root bridge. So this is for VLAN 001. मैं बोला हूँ spanning tree work for each VLAN. So our first VLAN is VLAN 1. So that is the default VLAN. So for that VLAN, as I have not created any VLAN in these switches, so by default एक ही VLAN है अभी, VLAN 001.
So I earlier mentioned that spanning tree work in par VLAN case. So spanning tree work par VLAN. हर एक VLAN के लिए spanning tree could be different. So but I have not created any VLAN in these switches. So by default एक ही VLAN है अभी VLAN 001. देखो स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE. सो ये IEEE से डिफाइंड है, वही बोल रहा है. नाउ रूट ब्रिज जो बना है उसका सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. और ये जो स्विच जीरो जो ब्रिज है, स्विच जीरो जो स्विच है उसका इंफॉर्मेशन ये वाला ब्रिज आईडी. सो रूट ब्रिज का इंफॉर्मेशन रूट आईडी ये वाला पार्ट. और जो मैं पर्टिकुलर अभी जो स्विच में हूं स्विच जीरो का, उसका इंफॉर्मेशन ये. अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी डिबैग ऑल द इंफॉर्मेशन वन बाय वन. सो जो रूट ब्रिज हुआ है इस कनेक्शन में, हाँ बोलो. रूट आईडी क्या है सर? रूट आईडी मतलब ये जो रूट ब्रिज हुआ है ना, इस तीनों में एक रूट ब्रिज हुआ है. इस तीनों में एक रूट ब्रिज हुआ है. स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किसी एक को रूट ब्रिज बनाया है. सो उसका इंफॉर्मेशन तो मैंने बोला हूं सारे स्विच अपने के बीच बीपीडीयू मैसेज एक्सचेंज करता है. तो बेस्ड ऑन दैट रूट ब्रिज इज डिसाइडेड. तो सारे स्विच को पता है कौन रूट है, तो उसका इंफॉर्मेशन स्विच जीरो में है. इस कनेक्शन में जो रूट हुआ है उसका इंफॉर्मेशन हर एक स्विच का रूट आईडी जो है वहां पे है. रूट आईडी मींस रूट ब्रिज इंफॉर्मेशंस. ओके. नाउ in this connection noise is coming, someone is talking. Hello, someone is talking, very much noise is there. Okay. What I am saying is, so there are 3 switches. So I am in now switch 0. मेरे को पता नहीं कौन रूट ब्रिज है. I don't know. Using the show spanning tree, I will see who is the root bridge and what other information I can create from the spanning tree, that I will see now. So first I open the switch 0 CLI command. switch 0 में हूं मैं, वहां पे मैं show spanning tree command चलाया. चलाने के बाद मेरे को पास 2 इंफॉर्मेशन आ रहा है, एक रूट आईडी, एक ब्रिज आईडी. रूट आईडी मतलब इस कनेक्शन में जो तीनों स्विच है इसके अंदर जो रूट बनाया है, रूट ब्रिज जो हुआ है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आई हैव सेट कि बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड, सो बैकग्राउंड में चल रहा है. सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मेक्स सामन between these 3 switches, makes summon as a root bridge. तो जो रूट ब्रिज हुआ है उसका इंफॉर्मेशन हर एक स्विच के पास रहेगा. So that information we can see in the root ID part. So this whole is the root ID part, root bridge का इंफॉर्मेशन. और ब्रिज आईडी है मैं जो स्विच में हूं उसका इंफॉर्मेशन. Understand? Now this is the root bridge information. root bridge का प्रायोरिटी क्या है? 32769. Now you may confused. मैंने बोला हो by default हर एक का प्रायोरिटी सबका सेम होता है. It is 32768 में बोला हो, but why 9? There is a reason why 9. 32769 क्यों? 32768 is by default priority.
+1 for this VLAN 001. VLAN 1 के लिए +1 क्या है? That's why 32769. अगर VLAN 2 के लिए होता तो +2 हो जाता 32768 के साथ. That case it will be 32770. VLAN 1 है, इसलिए प्रायोरिटी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 32768, उसके साथ +1 क्या है? So let me do one thing. So this actually 32769. This is actually by default 32768 plus 1 for this VLAN 1. I understand. ये रूट ब्रिज का जो रूट ब्रिज हुआ है इस कनेक्शन में उसका प्रायोरिटी वैल्यू और उसका मैक एड्रेस ये है 00001 C9B0. दिस द मैक एड्रेस. ओके. रूट आईडी का जो कॉस्ट है पोर्ट कॉस्ट वो है 19. हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्ट इज देयर? रूट ब्रिज का जो कितना नंबर ऑफ पोर्ट कनेक्टेड है, 2 पोर्ट कनेक्टेड है. So some of them are become the root bridge. I don't know. Sorry, just a minute. Some of them are as a root bridge, but I don't know which one. But मेरे को ये पता चल रहा है यहाँ से कि जो रूट ब्रिज हुआ है, जो रूट ब्रिज हुआ है उसका मैक एड्रेस ये है. I am in switch 0. I execute this command show spanning tree in switch 0. Switch 0 में मेरे को रूट ब्रिज का मैक एड्रेस मिल रहा है प्लस उसका जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो भी मिल रहा है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन पॉइंट. दिस इज द प्रायोरिटी वैल्यू of the root bridge and this is the priority value of the switch 0. क्योंकि ये जो ब्रिज आईडी वाला पार्ट है, ये मैं जो स्विच में ये कमांड एग्जीक्यूट किया हूँ उस स्विच का इंफॉर्मेशन है. सो आई हैव एग्जीक्यूट दिस कमांड इन स्विच 0. सो दिस ब्रिज आईडी इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्विच 0. स्विच 0 का भी प्रायोरिटी 32769 है. एज आई सेड बाय डिफॉल्ट होता है 32768. सारे का सेम होता है. VLAN 1 के लिए +1 हुआ है सारे के लिए, क्योंकि हर एक VLAN 1 में ही काम कर रहे हैं. So that's why the here also priority 32769. Now here switch 0 का MAC address क्या है? 0060562 है. So but root bridge का जो MAC address वो 0001 है. So is the switch 0 is the root bridge? MAC address different है. So switch 0 is not root bridge. अगर ये दोनों मिल जाता, ये मैक एड्रेस और दिस मैक एड्रेस, तो मैं बोलता कि यही स्विच रूट ब्रिज है. ओके. अगर जिस स्विच में मैं स्पैनिंग ट्री शो स्पैनिंग ट्री कमांड रन कर रहे हो उस स्विच का मैक एड्रेस दैट आई विल गेट ब्रिज आईडी एड्रेस ये वाला, और रूट ब्रिज का मैक एड्रेस अगर सेम होता देन आई कैन से itself that switches is the root bridge, but the MAC address is different. That means switch 0 is not the root bridge. Let's go back to the switch 1. CLI command Ian show spanning tree. Same command I am running in now switch on. Understand switch on कौन सा है? ये वाला switch on है, ये वाला. So I am running it into the switch 1. So I am doing executing show spanning tree in switch on. See this. रूट आईडी मतलब रूट ब्रिज का प्रायोरिटी, रूट ब्रिज का मैक एड्रेस. ब्रिज आईडी मतलब स्विच ऑन का प्रायोरिटी,
जो मैं जिस स्विच में हूँ, स्विच ऑन में हूँ, तो उसका प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है। देखो प्रायोरिटी वैल्यू सबका सेम है, तो ब्रिज आईडी मतलब रूट ब्रिज का अगर अगर कोई रूट ब्रिज होना चाहे तो उसका ब्रिज आईडी सबसे कम होना चाहिए, बट ब्रिज आईडी इज द समेशन ऑफ द प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। प्रायोरिटी तो सबका सेम ही है, तो इस केस में मैक एड्रेस इज द टाई ब्रेकर। सो मैक एड्रेस जिसका कम होगा वही रूट ब्रिज माना जाएगा। In this case also we can see switch on is not the root bridge because ये जो मैक एड्रेस है और ये जो मैक एड्रेस है, रूट ब्रिज का जो मैक एड्रेस एक्चुअली जो स्विच रूट ब्रिज बना गया है उसका जो मैक एड्रेस है और स्विच ऑन का जो मैक एड्रेस है, जो मेरे को जो ब्रिज आईडी यहाँ से मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई this is not also root bridge. Okay, let me now check switch 2. I'm going to the CLI in show spanning tree. Show spanning tree. Okay. Now tell me. Switch 2 is the root bridge. रूट ब्रिज का जो मैक एड्रेस है और स्विच 2 का जो मैक एड्रेस है, दैट आर मैचिंग. So it is saying this bridge is the root. See, this bridge is the root. Just excuse me for a minute. I will come back again. Yes. Okay. So, is it clear now कि कौन सा रूट ब्रिज हुआ है? How I can match it if the MAC address of the root bridge का जो आईडी है, रूट ब्रिज आईडी का जो मैक एड्रेस है और जो करेंटली मैं जो स्विच में हूँ उसका जो मैक एड्रेस है, इफ दोस मैच, देन आई विल से दैट स्विच इज द रूट ब्रिज. यहाँ पे लिखा भी आएगा दिस ब्रिज इज द रूट. स्विच 2 को रूट बना गया है, सो स्विच 2 इज योर रूट. स्विच 2 इज द रूट ब्रिज. In this connection, switch 2 को root बना गया है. This is the root bridge. Who do this spanning tree protocol? Background में चल रहा है. He decided who is going to be the root bridge. See one thing. Switch 0 में मैं फिर से जाता हूँ. Switch 0 में मैं फिर से जाता हूँ. Enable show spanning tree.
नहीं। देखो इसका मैक एड्रेस और इसका मैक एड्रेस सेम नहीं है, तो ये रूट ब्रिज नहीं है। एंड यहाँ पे लिखा भी नहीं आ रहा है दिस इज द रूट ब्रिज, सो इट इज नॉट द रूट ब्रिज। बट इसका ब्रिज आईडी कैलकुलेशन क्या होगा, ब्रिज आईडी जो वैल्यू आ रहा है उसका कैलकुलेशन क्या होगा। सी हियर आई एम राइटिंग, so in this case, in this scenario you can see हर एक का प्रायोरिटी सेम है 32769, प्रायोरिटी इज सेम, so priority is not going to affect the bridge id calculations, प्रायोरिटी सबका सेम है। टाई ब्रेकर कौन है, मैक एड्रेस, इन दिस केस मैक एड्रेस इज द टाई ब्रेकर। सो ये स्विच जीरो का मैक एड्रेस देखो 0060 पहला वाला, सो स्विच जीरो का मैक एड्रेस का पहला है 0060। ओके, स्विच ऑन में मैं जाता हूँ, नाउ आई एम इन स्विच ऑन। स्विच ऑन का देखो मैक एड्रेस क्या है, ब्रिज आईडी, ये यहाँ पे ही उस स्विच का मैक एड्रेस में रहेगा, दिस 0008 0008 0008, व्हिच इज कितना होता है अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ए को, ए कितना होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी, ए बी सी डी ई कितना होता है? हाँ सॉरी, दिस इज अ हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ए का डेसिमल कितना होता है? 10 10 10, हाँ 10, this is 10. actually giving 10, the value is 10, so 0008 the value is 10, 0060 इसका value, this is 60 only, 60 only। now ये जो ब्रिज है स्विच है इसका मैक एड्रेस क्या है, 0001, फर्स्ट ऑक्टेट का ही देखो और देखने का जरूरत नहीं है, 0001। सो अगर 0001 है 0001 which will turn to 1 only। सो हर एक का प्रायोरिटी अगर जाओगे, हर एक का रूट में जाओ, हर एक का देखो प्रायोरिटी सेम है 32769। स्विच 1 में जाओ, प्रायोरिटी सेम 32769। स्विच 0 में जाओ, प्रायोरिटी सेम 32769। सो जिसका मैक एड्रेस सबसे कम होगा वही रूट ब्रिज बना जाएगा। ब्रिज आईडी कैलकुलेशन में प्रायोरिटी आर सेम, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस, किसका मैक एड्रेस सबसे कम हो रहा है, दिस इज 10, फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू देखो, बस फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू देखने से ही पता चलेगा, दिस इज गिविंग 10, दिस इज 60 एक्चुअली एंड दिस इज 1, किसका कम हो रहा है, स्विच 2 का कम हो रहा है मैक एड्रेस वैल्यू, so that's why switch to become the root bridge। देख भी सकते हो रूट ब्रिज, ये जो रूट ब्रिज बोला है दिस ब्रिज इज द रूट, मतलब दिस स्विच इज द रूट, उसका मैक एड्रेस, रूट ब्रिज का जो मैक एड्रेस और ये स्विच 2 का जो मैक एड्रेस, both are matching, that's why that's why I'm telling this is the root bridge। but how it is decided, it is decided based on the priority plus MAC address। प्रायोरिटी सबका सेम है सारे स्विच का, मैक एड्रेस तीनों के बीच मैक एड्रेस सबसे कम है स्विच 2 का, that's why it's become the root bridge। प्रायोरिटी सारे का सेम है 32769, but MAC address is different
एंड सबसे कम जिसका मैक एड्रेस का वैल्यू है, सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट का वैल्यू देखो, उससे ही जो वैल्यू सबसे कम होगा वही कम माना जाएगा। सो स्विच 2 का मैक एड्रेस का वैल्यू सबसे कम 0001, स्विच 0 का है 0060, स्विच ऑन का है 0008, that going to be 10, this is 60, this is 1. So switch 2 is the root bridge. This is how the spanning tree protocol decided who is going to be the root bridge. And we are verifying also the same thing. Yeah. Tell me now, is from till this point you have any confusions? Till this point you have any confusions? सर Abhishek, you have any doubt? Because you used to ask me, any doubt is there? If you have any doubt, please tell me. Abhishek, do you have any doubt? Abhishek is not there, right? So tell me anyone that is there anyone has doubt or not? Harshit, doubt hai? No, sir. Clear? Yes, sir. सर हेलो हाँ सर अभिषेक हाँ बोलो। सर वो जो था प्रायोरिटी कॉस्ट जिसमें पहले देख रहे थे फिर मैक एड्रेस देख रहे थे, वो पोर्ट ब्लॉक करने के लिए देख रहे थे। वो पोर्ट ब्लॉक वो मैं बाद में आ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ दिखाया कौन सा रूट ब्रिज हो रहा है। इनिशियली सबसे पहले तो सर वो यही होता है ना, क्या बोलते हैं, रूट ब्रिज। इनिशियली रूट ब्रिज डिसाइडेड होता है, देन रूट ब्रिज डिसाइडेड होने के बाद पोर्ट ब्लॉक होगा, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो मैं बाद में आ रहा हूँ, बट अभी देखो अभी रूट ब्रिज कौन बना, ये प्रैक्टिकली मालूम पड़ा ना कौन बना, वेरीफाई जो किया, ये समझ आया ना। हाँ ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट सबका प्रायोरिटी तो सेम ही होता है 32768। नाउ VLAN 1 के लिए 32768 प्लस 1 होगा, VLAN 2 अगर होता प्लस 2 होता, VLAN 3 होता तो 32768 के प्लस 3 ऐड होता, 32768 के साथ प्लस 3 ऐड होता, बट दैट इज बाय डिफॉल्ट सबका सेम है प्रायोरिटी। तो इन दैट केस जिसका मैक एड्रेस सबसे कम होगा वही रूट ब्रिज बनेगा। So all these three switches, among these three switches, switch 2 का MAC address का value कम है, that's why it's become the root bridge. Now I will show you कि ब्लॉक कौन सा ब्लॉक हुआ है। जो ब्लॉक हुआ है ये ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लॉक हुआ है, ऑरेंज वाला जो पॉइंट है। All the green are forward or designated port. Okay. So इतना तक समझ आया क्या कि कैसे रूट ब्रिज हुआ है? अभिषेक इतना तक समझ आया कौन रूट ब्रिज हुआ है? हाँ सर समझ गए, वो एड्रेस मैच करना है। So now we are going to see some उस कमेंट में और भी कुछ देखना था हमें। Now we are going to see those things. So let's start with root bridge switches. Switch 2 में मैं हूँ। I am doing again show spanning tree. ओके, देखो और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है स्विच या स्विच 2 में हूँ मैं, अंडरस्टैंड दिस, स्विच 2 में हूँ मैं
स्विच 2 का FA0/1, FA0/1 मतलब कौन सा है? दिस वन, मेरा कर्सर जहां पे है ये वाला 0/1, FA0/1। दिस वन स्विच 2 का जो रूट ब्रिज है, डेजिग्नेटेड पोर्ट DSG, देखो लिखा है फॉरवर्ड, स्टाटस है फॉरवर्ड, पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट। कॉस्ट क्या है? पोर्ट कॉस्ट क्या है FA0/1 का? 19 कॉस्ट। फास्ट इथरनेट लगाया हूं इसलिए 19। और FA0/1 स्विच 2 का FA0/1 कौन सा रोल है इसका? डेजिग्नेटेड पोर्ट, DSG मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है। सो और इसका पोर्ट कॉस्ट है 19। सो कैन आई राइट हियर 19? So this is port cost is 19, FA0/1। स्विच 2 का, स्विच 2 है, स्विच 2 का दिस इज 19 port cost FA0/1 का, and that is also designated port. Now FA0/2 of switch 2 का FA0/2, this one which is connected to switch on, that one is also designated, and port cost क्या है? 19 designated at 19. Can I write here 19? So FA0/2 of switch 2 designated port, or port cost is 19. Fine. Okay. Now go back to switch on. Switch on. Enable. स्विच ऑन का एनेबल मोड में शो स्पैनिंग ट्री करता हूं। शो स्पैनिंग ट्री करता हूं। रूट पोर्ट F0/2, रूट पोर्ट F0/2, क्यों? शोइंग कि F0/2 इज द रूट पोर्ट। देखो मैं स्विच ऑन में हूं, स्विच ऑन का F0/2 दिखा रहा है रूट पोर्ट। क्यों? रूट की तरह जा रहा है इसलिए। दिस इज द रूट ब्रिज, रूट की तरह जा रहा है ये वाला पोर्ट। सो F0/2 इज द रूट पोर्ट। फॉरवर्ड स्टेटस में मतलब सेंड रिसीव कर सकता है, डेटा फॉरवर्ड कर सकता है। कॉस्ट क्या है? 19। ऑलरेडी आई हैव राइटन है 19 कॉस्ट। ये दोनों का बीच कॉस्ट है 19 ऑन। ओके। F0/1 ऑफ स्विच 1, F0/1 मतलब ये वाला, F0/1 मतलब ये वाला। व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो डेजिग्नेटेड पोर्ट। दिस इज डेजिग्नेटेड पोर्ट, ग्रीन कलर से है तो डेजिग्नेटेड पोर्ट है। एंड इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द रूट, जो जाएगा वो रूट पोर्ट है। ओके, दिस इज आल्सो डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑफ स्विच ऑन। फाइन। कॉस्ट क्या है? 19। F0/1 का कॉस्ट क्या है? 19। सो F0/1 ये वाला, इसका कॉस्ट है 19। सो लेट मी राइट डाउन द 19। देखो स्विच 0 में जाता हूं, दिस इज स्विच 0। enable show spanning tree. Only this command show spanning tree is going to handy for this spanning tree protocol. Show spanning tree. So I am again showing the spanning tree in switch 0. Switch 0 का FA0/1 is block state, DLK block. This become alternative port. ये एक alternative port था, but alternative मतलब रूट के जाने के लिए स्विच ऑन के लिए एक अल्टरनेटिव पोर्ट था।
but that is in the block state, F0 by 1 block state. But F0 by 2 switch 0 का switch 0 में है, F0 by 2 which one? F0 by 2 this one, that is the root port because it is going towards the root. See, Fa0 by 2 of the switch 0 is going towards the switch root bridge, going towards the root bridge. So that's why this is the root port and the cost is 19. Okay, ठीक है अभी तक? सर वो बोलो, डेजिग्नेटेड पोर्ट इसमें नहीं शो करता है क्या? डेजिग्नेटेड पोर्ट अगर कोई रूट पोर्ट है तो उसके लिए डेजिग्नेटेड पोर्ट क्यों शो करेगा? स्विच 0 का नहीं, जैसे सर आप कल एग्जांपल बताए थे जिसमें एक ऐसा पोर्ट था जिसमें वो रूट पोर्ट तो नहीं है लेकिन वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है। हाँ, तो ये तो दिखाया, यहाँ पे भी दिखाया, यहाँ पे मैं तो भी दिखाया कि वो डेजिग्नेटेड पोर्ट। देखो डेजिग्नेटेड पोर्ट स्विच ऑन में जाओ, स्विच ऑन में दिस इज डेजिग्नेटेड पोर्ट Fa0 by 1, Fa0 by 1 this zone is a designated port. It's not going towards the root, it's going towards the switch 0. switch 0 root नहीं है, this is designated port. designated port मतलब जो फॉरवर्ड रिसीव दोनों कर सकता है, सेंड रिसीव। सिमिलर वे स्विच 2 में जाओ, जो रूट ब्रिज है उसका दोनों पोर्ट, उसका दोनों जो पोर्ट है डेजिग्नेटेड पोर्ट है, DSC, DSC मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट। कहाँ पे हो? स्विच 2 जो रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज दोनों पोर्ट, मैंने बोला था कि ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है दोनों पोर्ट। सो इट इज डेजिग्नेटेड पोर्ट, डेजिग्नेटेड मतलब दैट कैन सेंड एंड रिसीव। ओके, स्विच 0 का कोई भी डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पोर्ट तो ब्लॉक है, वो तो डेजिग्नेटेड नहीं हो सकता। Fa0 by 1 देखो ब्लॉक है, ऑरेंज कलर मतलब ब्लॉक, और एक पोर्ट है Fa0 by 2 जो रूट की तरह जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स ए रूट पोर्ट, इट्स ए रूट पोर्ट। रूट पोर्ट इटसेल्फ आल्सो ए डेजिग्नेटेड पोर्ट, बट अगर वो रूट पोर्ट है तो रूट पोर्ट ही दिखाएगा। एंड Fa0 by 1 ब्लॉक स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में है। देखो BL के मतलब ब्लॉक, BL के मतलब ब्लॉक, FWD मतलब फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड रिसीव कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है डेटा। ब्लॉक मतलब ब्लॉक हो गया, ठीक है। now ठीक है। now let me, so this is my, just a minute, if this is my connections, और मैंने पोर्ट कॉस्ट सबका देख लिया, सबका 19 है, सबका 19 है, सबका 19 है। तो ये तो रूट ब्रिज है, इसका कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। और रूट पोर्ट, जो रूट पोर्ट है, जो रूट की तरह डायरेक्टली जा रहा है, वो भी ब्लॉक नहीं होगा। तो ब्लॉक ये दोनों के बीच एक होगा, either this port, either this, okay, और this, इस दोनों पोर्ट पे एक ब्लॉक होगा। नाउ अगर पाथ कॉस्ट डिफरेंट होता, स्विच ऑन का 19 प्लस 19 दे रहे हैं, स्विच 0 का भी 19 प्लस 19 दे रहे, 38, दोनों सेम है। इन दिस केस आई हैव सेड जिसका मैक एड्रेस ज्यादा होगा उस वाला पोर्ट ब्लॉक होगा। स्विच ऑन का मैक एड्रेस का वैल्यू आया है 10, फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू आया है 10। स्विच 0 का फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आया है 60, किसका मैक एड्रेस ज्यादा है? स्विच 0 का, इसलिए स्विच 0 का वो पोर्ट ब्लॉक हुआ है, Fa0 by 1 ब्लॉक हुआ है। How STP decided which is blocked? देखो दोनों केस में 19 प्लस 19 है, स्विच 0 के लिए भी 19 प्लस 19,
स्विच ऑन के लिए भी 19+19 है, बोथ आर मैचिंग, बट if both are matching, who will be the tiebreaker? MAC address. मैक एड्रेस जिसका ज्यादा होगा उस वाला स्विच का पोर्ट ब्लॉक होगा। ये तो ब्लॉक नहीं हो सकता है 0/2। वाई 0/2 कैन नॉट बी ब्लॉक? बिकॉज इट इज रूट पोर्ट और इट्स गोइंग टुवर्ड्स रूट ब्रिज की तरह जा रहा है, दैट्स व्हाई। So either any of this FA0/1 of the switch on and switch 0 का FA0/1, इन दोनों के बीच एक ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा? अगर कॉस्ट जिसका कम होता, जिसका ज्यादा होता कॉस्ट, वो ब्लॉक होता। बट इन दिस केस बोथ कॉस्ट आर सेम, 19+19, 19+19. In this case, these will be blocked which have the higher MAC address value. So actually STP के लिए सारे every lower thing is good, every lower thing is good. STP प्रोटोकॉल के लिए सब कम अच्छा है, कम मैक एड्रेस, कम प्रायोरिटी, कम ब्रिज आईडी, एवरीथिंग वो सब अच्छा होता है। जिसका मैक एड्रेस, सो इन दिस केस मैक एड्रेस इसका ज्यादा है तो इसका वाला पोर्ट ब्लॉक कर दिया, इसका मैक एड्रेस कम है तो इसका वाला पोर्ट को डेजिग्नेटेड पोर्ट बना दिया। It can be forward, but it is blocked. Understand? Till now? Till now understand? Yes, sir. Okay, great. मैं अभी एक काम करता हूँ। Okay, let's see what thing I am doing. Understand this. अभी मैं एक काम करता हूँ। मैं अभी ये स्विच 1 और स्विच 2 के बीच, स्विच ऑन एंड स्विच 2 के बीच और एक कनेक्शन लेता हूँ, and that connection is I am going to use gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet C. ये जो कनेक्शन था ये फर्स्ट इथरनेट था, FA मतलब फर्स्ट इथरनेट। अभी मैं स्विच ऑन जो रूट ब्रिज नहीं है, स्विच टू इज द रूट ब्रिज, तो स्विच ऑन और स्विच टू के बीच में एक गीगाबिट कनेक्शन ले रहा हूँ, गीगाबिट कनेक्शंस। अभी देखो क्या होता है, देखो क्या हो रहा है स्लोली। दिस ऑन इज द गीगाबिट वन, जो नीचे में है, सेकेंड वन, दोनों के अंदर ये जो नीचे वाला है ये गीगाबिट है। देखो क्या होता है, इट इज टेकिंग टाइम। क्या होगा देखो एक बार, देखो क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये नीचे वाला गीगाबिट है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ तुम लोगों को समझने के लिए, तो ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, पोर्ट लेवल में हटा देता हूँ। देखो क्या हुआ है अभी, ये जो दो कनेक्शन है स्विच एंड स्विच टू के बीच, एक है फास्ट इथरनेट, ये एक है फास्ट इथरनेट, ये है फास्ट इथरनेट, दिस इज एफ है फास्ट इथरनेट, जिसका कॉस्ट होता है 19, इसका कॉस्ट होता है 19। ये ऊपर वाला जो है ये वाला वो फर्स्ट इथरनेट है, और नीचे वाला जो है वो गीगाबिट है, और एक होता है गीगाबिट। दो कनेक्शन है जो जिसका वैल्यू है 4। अभी देखो क्या किया है, देखो ये रोड ब्रिज है, इसका कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा जितना भी पोर्ट लगाओ। नाउ स्विच ऑन और स्विच टू के बीच दो कनेक्शन है,
एक कनेक्शन का कॉस्ट है 19, एक कनेक्शन का कॉस्ट है 4। एक कनेक्शन का कॉस्ट है 19, एक कनेक्शन का कॉस्ट है 4। तो वो 19 वाला जो है उसका पोर्ट स्विच ऑन का उसका पोर्ट ब्लॉक कर दिया। मैं दो रिडंडेंट कनेक्शन लगाया, एक का कॉस्ट 4 है, एक का है 19। सो ये एक लूप बन जा रहा है ना, तो जिसका कॉस्ट कम हुआ इस पाथ में दो कनेक्शन के बीच, वो वाला को रख दिया ग्रीन ग्रीन, दोनों साइड ग्रीन है। देखो गीगाबिट का दोनों साइड ग्रीन है, बट फास्ट इथरनेट वाला का स्विच वन का पार्ट में ब्लॉक है। ऑरेंज मतलब ब्लॉक। Understand? So if I do here show spanning tree, you can see in the switch on I am doing show spanning tree. Show spanning tree. स्विच ऑन में कर रहा हूँ। देखो गीगाबिट वाला को रूट पोर्ट बना दिया एंड एफ ए 0/1, एफ ए 0/1 मतलब उसका ये वाला पार्ट है, ये वाला एफ ए 0/1 ये वाला है जो स्विच 0 की तरह जा रहा है। दैट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड पोर्ट, फाइन। बट ये जो एफ ए 0/2 जो पहले पहले ये रूट पोर्ट माना जा रहा था, बट जब ये गीगाबिट कनेक्शन आया जिसका कॉस्ट 4 है, इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसका कॉस्ट 19 है। So that's the beauty of STP. Did you understand this point? Do you understand? Please response. मैंने क्या दिखाया अभी? Yes, एक रिटर्न। Do you understand क्या हुआ है एक्चुअली? एक गीगाबिट लगाने से दूसरा जो फर्स्ट इथरनेट था उसको ब्लॉक कर दो, उस वाला पोर्ट को ब्लॉक कर दे। देखो स्विच टू रूट ब्रिज है, उसका कोई भी पोर्ट ब्लॉक होने वाला नहीं, सारे पोर्ट उसका डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ब्लॉक कौन सा हुआ? स्विच ऑन जो रूट ब्रिज नहीं है, उसका जो हाई कॉस्ट वाला पोर्ट था, हाई कॉस्ट 19 वाला फर्स्ट इथरनेट, उस वाला पोर्ट को ब्लॉक किया है आफ्टर कनेक्टिंग द गीगाबिट। गीगाबिट का कॉस्ट है 4। तो दोनों के अगर दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर दोनों रहेगा तो लूप बन जाएगी, तो इसके लिए एक को ब्लॉक कर, जो हाई कॉस्ट है उसको ब्लॉक कर। ओके, सो अगर कॉस्ट डिफरेंट है तो उस केस में लो कॉस्ट वाला को रखेगा, मैक्सिमम कॉस्ट को, मैक्सिमम जो कॉस्ट जो स्विच मैक्सिमम कॉस्ट दे रहा है उसका पोर्ट ब्लॉक करेगा। अगर दोनों का कॉस्ट सेम है देन जिसका मैक एड्रेस कम होगा वो वाला रहेगा, जिसका मैक एड्रेस ज्यादा होगा उसका पोर्ट ब्लॉक होगा। दैट्स सो in STP everything low is good, everything low is, everything low there is a S, everything higher there is a no. So in STP low is good, higher is bad. Okay, okay. अच्छा, अभी मैं सारे कनेक्शन को डिलीट करता हूँ। Oh, okay, sorry. So I am deleting this, all these connections, all these things. All these things I am now deleting. So again I am making a connections.
So now they are learning, they are listening mode, they are learning now, and all are, that's why all are in block state. ब्लॉक स्टेट से जब स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, कुछ कुछ ग्रीन होगा, कुछ कुछ some of the port will be remain orange. So you can see some of the port already become green, some of the port is becoming green. So this state, this time which is taking to make it stable, it's called convergence mode. Convergence mode. Now stable हो गया. And let me check in this connection who is the root. I think switch 2 is only the root here also. Shows spanning tree. Shows spanning tree. So in this case you can see switch 2 ही root है. देखो इसका MAC address, root ID का जो MAC address है, root bridge का जो MAC address है, और switch 2 का जो MAC address है, similarly that's why switch 2 is the root. Now, सर हाँ एक डाउट है सर, हाँ बोला. सर ये हटाइए ना, तो जो बनाया है उसको तो कभी सर पिछले बार आप यहाँ पे सर स्विच 1 से स्विच 2 में जब एक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश किए थे FS01 यूज करके, तो सर आप अभी दूसरा, बोले थे कि अभी दूसरा किया, उसमें क्या फर्क है? नहीं बोल रहे हैं कि सर उसमें हम पूछे नहीं सर, पूछना था ये कि आप बोले थे जैसे कि वो डायरेक्ट जो कनेक्टेड होता है ब्लॉक पोर्ट से वो ब्लॉक नहीं होता, लेकिन जिसका कॉस्ट ज्यादा था वो तो यहाँ पे इंटरफेस ब्लॉक हो गया. डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है वो ब्लॉक नहीं होते, किसके साथ बोला था? मतलब जैसे कि जो भी पोर्ट जा रहा है ब्लॉक, सॉरी ब्रिज रूट जो मेरा ब्रिज, हाँ रूट ब्रिज वाला कोई कनेक्टेड भी, है. रूट ब्रिज वाला कोई पोर्ट ब्लॉक हुआ है? रूट ब्रिज वाला नहीं हुआ है, लेकिन सर जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है वो तो ब्लॉक हुआ था. तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये तो ब्लॉक हुआ है. यहाँ पे नहीं सर, पिछला एग्जांपल में सर अच्छा, आप जब पिछला गीगाबिट गीगाबिट, तो उस टाइम में कितना ऑल्टरनेटिव पाथ बन रहा था? डायरेक्ट कनेक्शन एक स्विच के साथ रूट ब्रिज का कितना कनेक्शन था, कितना कनेक्शन था उस केस में? आई एम अगेन डूइंग दैट. गीगाबिट अभी कितना कनेक्शन बन रहा है? हाउ मेनी ऑल्टरनेटिव पाथ इज देयर? देखिए, हाँ अभी तो दो दिखा, तीन दो दिखा रहे ना. तो दो अगर होगा तो दैट्स अ लूप, स्विच 1 से स्विच 2 जा रहा है, फिर स्विच 2 से स्विच ऑन भी दो कनेक्शन है. देयर आर रिडंडेंट पाथ्स, इट्स अ रिडंडेंट. एक जगह से और एक जगह जाने का मेरे को दो रास्ता है, तो दैट इज एक तो रिडंडेंट माना जाएगा. तो इसलिए एक ब्लॉक किया है. अगर एक कनेक्शन होता, डायरेक्ट कनेक्शन एक ही होता, तब उसको फॉरवर्डेड डेजिग्नेटेड पोर्ट ही माना जाता या रूट पोर्ट माना जाता. बट इन दिस केस देयर आर टू कनेक्शंस, सो ऑन ऑफ देम विल बी रिडंडेंट. सो जो रिडंडेंट वाला है उसको ब्लॉक किया है, और एक वाला डेजिग्नेटेड रूट पोर्ट है. सो डायरेक्ट कनेक्शन तो इसके बीच अभी भी है, थ्रू दिस मतलब रिडंडेंट है वो तो ठीक है सर, लेकिन कॉस्ट मेन, मतलब मेरा मेन क्राइटेरिया है ब्लॉकेज का. हाँ, ब्लॉकेज का क्राइटेरिया कॉस्ट है, दैट इज फाइन. बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक डायरेक्ट कनेक्शन दो है, तो वो तो एक तो रिडंडेंट हो जा रहा है, तो कोई भी एक होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट, दैट इज फाइन. बट कोई भी एक तो रिडंडेंट नहीं हो रहा है. नहीं, ये ठीक है सर, हम समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप जैसे बोले कि स्विच 1 से, क्योंकि स्विच 2 मेरा रूट ब्रिज है और स्विच 1 से जो भी दोनों पाथ जा रहा है वो रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है, तो वो ना ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो ये ब्लॉक हो गया ना यहाँ पे, तो वही मेरे को फिर लगा कि क्यों हो रहा है. नहीं, दोनों स्विच ऑन से दोनों जा रहा है, इसलिए एक ब्लॉक कर रहे हैं. अगर एक जाता तो नहीं ब्लॉक हाँ होता. ठीक है सर.
अगर दोनों को अगर मैं ब्लॉक नहीं करता, अगर दोनों को ही लेट्स से डेजिग्नेटेड बना देता, then there is a redundancy is there is a loop is there. If there is a loop, it's not a spanning tree. So to make it a spanning tree, one of them will be blocked. You can make multiple connection also. एक रहेगा only. मैं और भी कनेक्शन दे सकता हूँ दोनों के बीच, बट एक ही रहेगा, एक ही रहेगा. दोनों देखो अभी ऑरेंज है, एक ही ग्रीन है. So that's why. Okay. Yes. Okay. Let's go back. So I don't know. Let me go back. First Ethernet connection ही है. So switch 2 is our root bridge. Now I have already mentioned you, I think, root bridge you can change. Root bridge you can change. You can change in two way. Cisco पैकेट ट्रेजर में रूट ब्रिज चेंज कर सकते हो. मतलब अगर तुम स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाना चाहते हो तो यू कैन डू दैट. अगर स्विच 0 को रूट ब्रिज बनाना चाहते हो यू कैन डू दैट. इन दिस केस स्विच 2 इज द बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लर्न किया है ऑटोमेटिकली. उस लर्न के बेसिस स्विच 2 इज द रूट ब्रिज. बट इन योर कॉन्फ़िगरेशन यू कैन चेंज द रूट ब्रिज. स्विच 1 को तुम रूट ब्रिज बना सकते हो, स्विच 0 को भी तुम रूट ब्रिज बना सकते हो. सो हाउ इट विल डू? Using some command it will do. So I have, you can remember, I have told you root bridge decided based on the bridge ID. Bridge ID is the sum of priority and MAC address. इस दोनों जिसके लिए सबसे लोएस्ट होगा वही रूट ब्रिज माना जाएगा. In our cases, in our example, priority सबका सेम है 32769. VLAN 1 के लिए, VLAN 1 के लिए 32769 आ रहा है. एक्चुअली बाय डिफॉल्ट है 32768. VLAN 1 प्लस 1 हो रहा है इसलिए, तो दैट विल गिविंग यू 32769. ओके. नाउ प्रायोरिटी सबका सेम है तो मैक एड्रेस इन दिस केस ट्राई बेकर हो रहा है. बट if you can change the priority of the switches, तो you can change also bridge ID. So priority अगर जिसका सबसे कम सेट करोगे, अगर तुम प्रायोरिटी कम सेट कर सकते हो, then that will become your root bridge. So you can change the priority of the switches. By changing the priority, you can decide that who is going to the root bridge. So root bridge बनाने का एक तरीका होता है प्रायोरिटी चेंज करना. So I am showing you switch 1 में मैं जाता हूँ, CLI में जाता हूँ. So मैं switch 1 को root bridge बनाऊंगा. अभी मेरा कनेक्शन root bridge है switch 2, बट मैं switch 1 को root bridge बनाऊंगा. ठीक है. अगर switch 1 को मैं root bridge बनाना चाहता हूँ तो I can change the priority. मैं ऐसा एक प्रायोरिटी सेट करूंगा जिसके वजह से स्विच ऑन का ब्रिज आईडी, मतलब जो मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, ये जो वैल्यू ये सबसे कम हो जाएगा दूसरा दो स्विच है, स्विच 0 एंड स्विच 2. इस दोनों के कंपेयर में स्विच ऑन का ब्रिज आईडी कम हो जाएगा बाय चेंजिंग द प्रायोरिटी. सो I will do that. So first let me execute this command show spanning tree in the switch on. Switch on में show spanning tree किया हो.
इसका प्रायोरिटी अभी क्या है? अभी प्रायोरिटी क्या है? 32769 है। ओके, स्विच 1 का प्रायोरिटी है, तो स्विच ऑन का प्रायोरिटी में चेंज करूंगा। स्विच ऑन का प्रायोरिटी में चेंज करूंगा, उसके लिए कमेंट है स्पैनिंग ट्री spanning tree. So I have said that spanning tree work for VLAN. So which VLAN I am working now? I am working on VLAN 1. So spanning tree for switch 1, spanning tree VLAN 1. Switch 1 का VLAN 1 के लिए, VLAN 1 के लिए set the priority. So the command is spanning tree स्विच ऑन में हूं मैं, तो स्विच ऑन का VLAN 1 के लिए सेट द प्रायोरिटी. सो आई सेट द प्रायोरिटी शुड बी मल्टीपल ऑफ 4096. कल मैं बोला था, सो यू हैव टू सेट सम प्रायोरिटी that is multiplication of 4096. So I am sitting here priority of the switch on 4096. You can set 4096 or 4096 into 2 जो होगा. So it should be a multiplication of 4096. Okay. So spanning tree VLAN 1 priority 4096. तो इसमें क्या होगा? VLAN 1 के लिए स्विच 1 का प्रायोरिटी 4096 चेंज हो जाएगा. अगर इसका प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा, देखो क्या होता है. मैं प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूं, देखो अभी क्या हो रहा है. सॉरी, invalid input. Okay, this should be in config term mode. Sorry. So I have to go to the config mode. Otherwise, why this will not work? Config terminal. I was in the privilege mode, but any configuration if you want to done that you have to go the config mode. So I'm in config mode. Now it will work. Spanning tree. VLAN 1 के लिए स्विच 1 का प्रायोरिटी आई एम चेंजिंग. Priority I am setting to 4096. Done. देखो अभी क्या हो रहा है. इस इमेज में आओ, देखो क्या हो रहा है. अभी स्विच 0 देखो कुछ चेंज हो रहा है, ऑरेंज हो गया. स्विच 1 का दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड था ऑलरेडी. देखो क्या हो रहा है. टाइम लेगा थोड़ा तो सेट. प्रायोरिटी मैंने स्विच 1 का चेंज किया. देखो क्या हुआ है. अभी हो गया स्टेबल. स्विच 0 का ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया. ये दूसरा पोर्ट, पहले ये वाला पोर्ट ब्लॉक था, अभी ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया. और अभी देखते हैं कौन रूट ब्रिज है. प्रायोरिटी चेंज किया मैं किसका? स्विच 1 का. और बाकी सबका प्रायोरिटी सेम ही है 32769. देखो, लेट मी गो टू द CLI ऑफ द स्विच 0. स्विच 0 का CLI में जाता हूँ. एनेबल शो स्पैनिंग. This is not the root bridge. Switch 0 is not the root bridge. जो रूट ब्रिज है उसका प्रायोरिटी 4097 है. 4096 मैंने सेट किया हो, बट VLAN 1 के लिए +1 होगा, मैंने बोला हो ये. सो 4097 है. और ये जो स्विच 0 का प्रायोरिटी क्या है? 32769. और मैक एड्रेस भी देखो मैच नहीं कर रहा है. तो स्विच 0 इज नॉट द ब्रिज, रूट ब्रिज. Now going back to switch 1. Now do the show spanning tree here. So just let me go back to the privilege mode. Privilege mode में हूँ. Switch 1 का privilege mode में मैं हूँ अभी. I am doing show spanning tree. See it now. These are matching
these are matching। और इसका जो प्रायोरिटी है इस स्विच का, स्विच ऑन का जो प्रायोरिटी है, जो ब्रिज आईडी प्रायोरिटी, ये वाला पार्ट है इस स्विच का, और जो रूट ब्रिज है उसका जो प्रायोरिटी है, ऑल आर सेम, मैक एड्रेस आल्सो सेम, it is also coming, this bridge is the root id, is the root, this bridge is the root, so switch on is now become the root। हाँ सर 4096 सेट किया था, 4097 हो गया, वो वाला एक्सप्लेन करिए सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट 32768 होता है। तो तुम दूसरा स्विच में जाओ, स्विच 0 में जाओ, इसका प्रायोरिटी वैल्यू 32769 है। क्यों है? 32768 बाय डिफॉल्ट होता है VLAN 1 के लिए +1, दैट्स व्हाई 32769। सिमिलर सर सो VLAN 10 के लिए +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, करेक्ट। VLAN 1 मैंने 4096 सेट किया हो, VLAN 1 के लिए +1 4097। अगर VLAN 2 के लिए सेम प्रायोरिटी तुम सेट करोगे 4096 तो होगा +2, 4096 +2, this is the case, that's why it's 4097। so what I am telling you, by changing the priority, स्विच 2 जो पहले रूट ब्रिज था वो अभी रूट ब्रिज नहीं है भाई, अभी नहीं है। अभी रूट ब्रिज बना दिया मैंने स्विच 1 को बाय चेंजिंग द प्रायोरिटी ऑफ द स्विच 1। स्विच 2 में जाओ, स्विच 2 जो पहले रूट ब्रिज था हमारा, इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें स्विच 2 वाज द रूट ब्रिज, बट नाउ show spanning tree in the switch 2, I am doing show spanning tree in the switch 2। now is it the root bridge MAC address are same? root bridge का जो MAC address और इसका जो MAC address same है? नहीं है। so switch 2 is not the root bridge। switch 1 में जाओ, switch 1 में लिखा है भी आ रहा है this is bridge is the root, this bridge is the root, और इसका MAC address और इसका जो है both are same। स्विच रूट ब्रिज का जो MAC एड्रेस और स्विच ऑन का जो MAC एड्रेस हो रहा है both are same, so that's why switch on is the root bridge। so changing the priority, so 4096 सेट किया हो, VLAN 1 के लिए 4097 हो रहा है +1, इसका प्रायोरिटी 4097 है, बाकी सबका प्रायोरिटी देखो इससे बहुत ज्यादा है 32769। स्विच 0 का 32769, स्विच 1 का, स्विच 2 का 32769। so priority, changing the priority, I made it root bridge। there is another way you can set one switch to root। how? there is a command, so now I am going to make switch 0 as a root, switch 0 को मैं root बनाऊंगा। so there is a way to make it, another way, there is another way। एक way है प्रायोरिटी चेंज करके, so रूट ब्रिज बनाने का एक वे है चेंजिंग द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी चेंज करके। अनदर वे, देयर इज अनदर कमेंट, सिंपल कमेंट। तो स्विच 0 में हूँ, लेट मी गो टू द कॉन्फिग मोड, कॉन्फिग टर्मिनोलॉजी, कॉन्फिग इज अ कमेंट स्पैनिंग ट्री। So I am making switch on as a switch 0 as a root bridge. So the command is another command spanning tree for VLAN 1. For VLAN 1, I am making it as a root. So just write root. Then it should be primary. So after root, I can give either primary or secondary. Primary or secondary. अगर मैं प्राइमरी बनाता हूं तो यही बन जाएगा मेरा मेन रूट। अगर इसको मैं सेकेंडरी बनाता हूं तो अगर प्राइमरी रूट जो इन दिस के स्विच ऑन है,
स्विच ऑन अभी किसी केस में फेलर हो जाता है, फेल हो गया स्विच ऑन, in that case switch 0 will be your secondary route. So you can make it as a primary or secondary. So I am making it as a primary. So if I make it as a primary, किसको बना रहा हूँ? स्विच 0 को. देखो अभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ये ऑरेंज हो गया. देखो अभी क्या होता है. It will take time to stable. Switch 0 is now becoming the root. It will take some time. Taking some time. Okay, stable. See, switch 0 is now your root. How I done it? Spanning tree for VLAN 1, switch 0 का root बनाओ as a primary. So now if you push show spanning tree command, show spanning tree in switch 0, it will come. This bridge is the root. इसका प्रायोरिटी वैल्यू सेट किया है एक्चुअली 0. प्रायोरिटी वैल्यू इसको बनाने के लिए, रूट बनाने के लिए, प्राइमरी रूट बनाने के लिए इसका प्रायोरिटी वैल्यू एसटीपी प्रोटोकॉल ने, जब मैंने इसको रूट डिक्लेयर किया एज ए कमेंट, जब मैंने इसको कॉन्फ़िगर, मैंने एज कमेंट मैंने किया था ना कि प्राइमरी रूट VLAN 1 के लिए इसको रूट प्राइमरी बना. एट द टाइम एसटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इसको सेट किया है प्रायोरिटी 0. तो VLAN 1 के लिए प्रायोरिटी 0 प्लस 1. That's why priority is 1. So that's why it's become now the root bridge. Switch 0 is now become the root bridge. So two way you can set the, you can change the root bridge. How? One of the way is changing the priority, and another way by setting it as a primary root. So I'm writing both the command in this pad. So one of the ways change priority. उसके लिए कमांड क्या है? स्पैनिंग ट्री. उसके लिए कमांड है स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के लिए. Suppose you are setting for the VLAN 1 priority, then value. In this value you put 4096 or 0, whatever, 04096, multiplication of 4096, put something. So this is the way to change the priority. In this way you can set the root bridge. जिसका priority value सबसे कम set करोगे वही root bridge होगा. And another way is make as primary root. उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड है स्पैनिंग ट्री. आई एम डूइंग फॉर द VLAN 1. सो VLAN 1 के लिए कर रहे हो तुम. VLAN 2, 3, अगर मल्टीपल VLAN है तो मल्टीपल VLAN के लिए, डिफरेंट VLAN के लिए यू कैन चेंज द रूट. सो VLAN 1 के लिए रूट प्राइमरी. Let's say there are multiple VLAN 2 is there. So
VLAN 2 के लिए तुम दूसरे को प्राइमरी बना सकते हो एज ए रूट. So that's in that case you have to put VLAN 2. So this is the two commands. Spanning tree VLAN 1 set the priority, and spanning tree VLAN then root, VLAN number then root primary. Okay, that's all about the spanning tree protocol. I hope you understand. Is it clear? Yes, sir. Madhav, clear, right?